welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Kartik Aaryan opens up about dating a Bollywood actress. Varun Dhawan and Kiara Advani were seen in a party mood at a song shoot. Shilpa Shetty leaves no stone unturned to promote Nikamma title track. क्या कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को किया है डेट? कार्तिक आर्यन ने बताया एक रिलेशनशिप में क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं. कार्तिक आर्यन के पेरेंट्स ने उन्हें फिलहाल शादी ना करने का सजेशन दिया है. नेशनल क्रश कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट करने की न्यूज को किया कन्फेस. अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने बताया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट करने में उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. वैसे तो कार्तिक आर्यन की सारा अली खान और कृति सैनन जैसी पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ अक्सर रिलेशनशिप की खबरें न्यूज में बनी रहती हैं, लेकिन खुद कार्तिक आर्यन ने कभी भी अपने इन रूमर्ड रिलेशनशिप्स पर रिएक्ट नहीं किया है. लेकिन अब कार्तिक आर्यन ने इनडायरेक्टली एक बात जरूर एक्सेप्ट की है, और वो ये कि उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट किया है. दो कार्तिक आर्यन ने किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं रिवील किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट ही फेस्ड इन डेटिंग एन एक्ट्रेस, तो कार्तिक आर्यन ने रिप्लाई करते हुए कहा दैट ही थिंक्स टू ईच हिज ओन. इन हिज वर्ड्स, इट इज नॉट अबाउट दिस प्रोफेशन, इट इज मोर अबाउट पर्सन टू पर्सन. आगे कार्तिक आर्यन ने ये भी बताया कि एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वर्क, ऑनेस्टी और लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है. वैसे इसी इंटरव्यू में जब कार्तिक आर्यन से शादी को लेकर उनके थॉट्स पूछे गए, तो उन्होंने साफ कह दिया that he does not think about it currently. In fact, he added that even his family has asked him to wait for a few years. The actor added that maybe he is not in that state of mind right now. While talking about having his own kids, Kartik Aaryan revealed that he likes kids, but he has not thought about having his own kids anytime soon and called it a far-fetched thought. बता दें, कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म की सक्सेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना. आखिरकार भूल भुलैया 2 साल की बिगेस्ट हिंदी ओपनर फिल्म जो बन गई है, और फिल्म में कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर भी ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है. This is Varun Dhawan's favorite song. जुग जुग जियो के सॉन्ग सेट से वरुण धवन और कियारा आडवाणी आए लाइव. वरुण धवन ने फैंस को दिखाया अपना शर्टलेस अवतार. वरुण धवन और कियारा आडवाणी कर रहे हैं फिल्म के एक सॉन्ग की शूट. वरुण धवन और कियारा आडवाणी कर रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो के एक सॉन्ग की शूटिंग. इस सॉन्ग के सेट से वरुण धवन और कियारा आडवाणी लाइव गए और वहां का पूरा व्यू अपने फैंस को दिखाया. अब जैसा कि आप इस लाइव वीडियो में देख ही सकते हैं, फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स अपने गेटअप में हैं, लेकिन अपने फैंस से लाइव कनेक्ट करने के बाद वरुण धवन इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने अपना अपर ही निकाल दिया. वरुण धवन के इस एक्शन पर कियारा आडवाणी भी थोड़ी शॉक्ड नजर आईं, और उन्होंने अपने को एक्टर वरुण धवन से पूछा भी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में वरुण धवन का ध्यान कियारा आडवाणी की तरफ नहीं गया और वो लाइव चैट के दौरान हो गए शर्टलेस. वैसे इस लाइव वीडियो में वरुण धवन फुल ऑन मस्ती के मोड में थे. कभी उन्होंने कियारा आडवाणी के साथ मिलकर फिल्म के डायरेक्टर राज मेहता के साथ मस्ती की, तो कभी वो कोरियोग्राफर बॉस्को के साथ ग्रूव करते दिखे. इस सॉन्ग शूट के दौरान वरुण धवन ने सेट पर मौजूद हर शख्स के साथ एंजॉय किया. यहाँ जुग जुग जियो एक्टर वरुण धवन ने अपने एक फेवरेट सॉन्ग पर अपने किलर डांस मूव्स भी दिखाए. इस दौरान वरुण धवन ने ये भी बताया कि जल्द ही ये गाना जिसकी वो शूटिंग कर रहे हैं वो रिलीज कर दिया जाएगा.
तो अब इंतजार 24 जून को रिलीज होने वाली जुग जुग जियो के इस सॉन्ग के आउट होने का है, क्योंकि जिस गाने के बिहाइंड द सीन्स इतने मजेदार हैं, श्योरली वो गाना भी अपने आप में बॉम्ब ही होगा। और गाने के वाइब्रेंट लोकेशंस, मस्ती और सेट के एम्बियंस को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गाना कैसा होने वाला है। शिल्पा शेट्टी का दिल हुआ निकम्मा। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया निकम्मा सॉन्ग का एंटरटेनिंग वीडियो। शिल्पा शेट्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं पसंद। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपनी अपकमिंग फिल्म का टाइटल ट्रैक एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हालांकि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी के कई वीडियोस का कंपाइलेशन है, लेकिन शिल्पा शेट्टी के फैंस ने इसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी रोट ऑन सोशल मीडिया, इतना सारा टैलेंट जब एक साथ एक छत के नीचे आता है तो हैशटैग निकम्मा गिरी का होना तो बनता है। हैशटैग निकम्मा टाइटल ट्रैक सुना ना? नहीं सुना तो क्लिक ऑन द लिंक इन माई बायो एंड एंजॉय द सॉन्ग। हैशटैग निकम्मा रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 17th June 2022। रिसेंटली ही शिल्पा शेट्टी ने अपनी अपकमिंग फिल्म निकम्मा का ट्रेलर लॉन्च किया था और वो फिल्म के अपने को स्टार्स अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेठिया के साथ इसका प्रमोशन करते कैमरास में कैप्चर भी हुई थी। आप देख सकते हैं फिल्म के स्टार्स कैसे अपनी फिल्म के सॉन्ग पर ग्रूव कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि 2002 के चार्टबस्टर सॉन्ग निकम्मा को फिल्म निकम्मा के लिए रिक्रिएट किया गया है। इस सॉन्ग को मैसिव सेटअप, ग्रैंड स्केल और तकरीबन 100 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ शूट किया गया है। ऐसे में एक्सपेक्टेशंस आर रनिंग हाई। फिल्म निकम्मा 17th जून को रिलीज होगी। ऐसे में शिल्पा शेट्टी इस फिल्म को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। शाहरुख खान को अपना आइकॉन मानते हैं आयुष्मान खुराना। जब आयुष्मान खुराना नहीं कर पाए शाहरुख खान को इंटरव्यू। आयुष्मान खुराना है शाहरुख खान के एक जबरा फैन। आयुष्मान खुराना ने कभी शाहरुख खान का किया था घंटों इंतजार। शाहरुख खान जैसा स्टार बनने की ख्वाहिश रखते थे अनेक एक्टर आयुष्मान खुराना। रिसेंटली आयुष्मान खुराना ने अपने एक कैंडिड इंटरव्यू में बताया कि वो शाहरुख खान से न सिर्फ इंस्पायर्ड हैं, बल्कि उनकी लाइफ में शाहरुख खान ने कितना इम्पैक्ट डाला इस पर भी खुलकर बात की। वैसे तो आयुष्मान खुराना आज बॉलीवुड में उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि खुद एक्टर आयुष्मान खुराना किंग खान के काफी बड़े फैन हैं। अपने इंटरव्यू में आयुष्मान खुराना ने बताया कि कैसे जब वो एक रेडियो जॉकी हुआ करते थे तो शाहरुख खान के इंटरव्यू के लिए उन्होंने 6-7 घंटे वेट किया था, जिसके बाद भी वो शाहरुख खान को इंटरव्यू नहीं कर पाए थे। I remember our first meeting. I was doing radio and I had to interview him. I couldn't interview him because he was shooting for an ad film. I waited for 6 to 7 hours and then he was busy. I had to do my show, go back to the studio. So I saw him sitting on the set. I saw him shooting. आयुष्मान खुराना ने ये भी रिवील किया कि कैसे शाहरुख खान ने उनकी लाइफ और उनकी चॉइसेस ऑफ सिनेमा दोनों पर अपना इम्पैक्ट डाला है। He has impacted me in life. I studied mass communication because of Shah Rukh Khan. I wanted to be an actor. I took my studies seriously. I topped in my college because of him. यही नहीं, एक ह्यूज फैन फॉलोइंग शेयर करने वाले आयुष्मान खुराना शाहरुख खान के जितने ही टॉल दिखना चाहते थे। इस पर चिट चैट करते हुए the Anek actor said, I am as tall as Shah Rukh sir. My parents are not tall. So for me, this height, I'm the tallest in my family. My brother is as tall as me. So I'm very happy with my height because I'm as tall as Shah Rukh Khan. That's my benchmark. बॉलीवुड के किंग खान के लिए आयुष्मान खुराना की ये दीवानगी बताती है कि वो कितने बड़े शाहरुख खान फैन हैं। फिलहाल आयुष्मान खुराना is gearing up for the release of his upcoming film अनेक। इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है।
The film co-stars Nagaland actress Andrea Kevichusa. इस सोशियो-पॉलिटिकल फिल्म में आयुष्मान खुराना एक अंडरकवर कॉप के रोल में है और फिल्म के प्रोमोज और कैच फ्रेजेस ने ऑलरेडी लोगों के दिलों में जोश भर दिया है, जिसके बाद अब सभी इस फिल्म की रिलीज का वेट कर रहे हैं। Coming up on the show, आयुष्मान खुराना ने किया जूम के साथ एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is extremely talented and he is someone who has always challenged himself on screen and now he's promising to reunite us. Like always, Ayushmann, do you think we can be reunited? Is there hope in that? Reunited? Yeah. Our diversity is our biggest strength and is. biggest weakness at the same time. Exactly. So, of course, the main endeavor of the film is to unite people, of course. And about Northeast, it's about Northeast, that part of that region of a country has been ignored since time immemorial. And this is the time, this is the age, we should just be more inclusive. And they've been facing racial slurs across the nation. And we thought it was high time when we made a film like that with Anubhav Sinha sir. And I think it's full of empathy and full of togetherness. आप के band में there were friends, you're friends from Northeast. Yeah. And you've hung around them, since long time. Tell me how you as a person, as an ally, I would say, as you saw the discrimination and how bad that used to be? I'm talking about mid-2000s when I was in college. Yeah. My band member's name was Sachidananda Angom from Manipur. Correct. And he used to call me Mayank. Manipuri में मयांक का मतलब होता है outsider, foreigner. तो मैं बोलता हूँ मुझे मयांक क्यों बुलाता है तू? Because you guys treat us like foreigners, so हम तुम्हें मयांक बुलाते हैं. Anybody who's from outside Manipur, we call them Mayanks. So it was disheartening to know that they didn't consider themselves as Indians. वो कहते हम नहीं कर रहे, आप नहीं consider करते हमें Indians के जैसे. So they used to feel very alienated in the university. I'm talking about Punjab University and in my college. They had a small community over there, but they were very active in music and theatre and art and everything. So he was part of a theatre group and music group. So I was good friends with him. I was just, I think 19, 20 that time. And my induction goes back like long way. And after that, India's Got Talent host किया था मैंने Shillong Chamber Choir जीता था उसमें. Correct. So I went there to their place and I heard them live in a very intimate kind of setting. Beautiful people. And I think उतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमारे देश में और कहीं नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है. अनुभव सिन्हा सर का और एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनके योगा टीचर नागालैंड से हैं. सो वी हैड लाइक क्लोज इंटरेक्शंस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस विद पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रिगर. उनसे बात हुई अपने दोस्तों से जब ट्रेलर निकली या जब आप फिल्म कर रहे थे, क्या उन्हें बताया कि आपकी याद आई या योर कन्वर्सेशंस? आई थिंक वो अलग फील्ड में जा चुका है मेरा दोस्त. नॉट बीन इन टच विद हिम बट we've been getting good messages from Northeast. मतलब they are very very excited कि पहली बार representation correct मिला है उनको. आज तक कभी representation नहीं मिला था. हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में they were certain characters, छोटे छोटे roles के लिए. but पहली बार leading actor Northeast से है जिसका role मेरे बराबर है. and उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी है, तो representation is absolutely correct for this particular film. I want to ask you, it's been a while, like you rightly said, to see a leading lady, like Andrea on screen. And I hope this will change a lot of things. Did you feel similarly when this was happening? Because the last time, there was a movie like Mary Com, where of course Priyanka is very, very talented, but was criticized because of the representation matter. And this, I felt, is a step in the right direction. But when you all were doing it, you all knew this is going to be huge and hopefully will change the way we look at things. Indian cinema is fast evolving, I think. I think that time it was the first film, and of course it's a star-driven industry at the same time. So I think Priyanka did a great job. But we are talking about like 10 years back, 10 odd years back. But now times have really changed. Like even, I think a couple of years back we were talking about representation in my film also at the same time. So we've come a long way. Indian cinema has aged well with Anek, with Andrea as a leading face of the film. It's not just Andrea, like 70% of the cast is from the Northeast. So we have taken the back seat. Yeah. It's time to pass on the mic and they should talk about their journey, their struggles.
and it's coming from them. Andrea is just 21 and she's got a very, very calm head on her shoulders. She's from academics background, so she's the correct representation and she has her opinions. So I think it's great to have her on board. That when the trailer came out and when we were seeing the trailer, it was just a coincidence that the entire language thing was included in the trailer and we were discussing it. And at that time, around that time, with Kichu Sudeep's tweet and Ajay responding to it and everything, it all became about our language and your language. I want to know, as someone who's a part of the industry, when this was happening, how you looked at it, and particularly how you felt, because you had already done a film and around the subject. I want to see, how did you look at the entire situation? I guess we have to respect each and every language in the country. India is not that country which is going to survive on one particular language. It's a diverse nation, as I said. Our diversity is our biggest strength and biggest weakness. वो हम पे depend करता है उसको strength बनाना कि weakness बनानी है. So it's very unfair. It will be very unfair for people who don't speak in Hindi to learn Hindi overnight. It is not even practical. For example, I learned French in my college days. I can't speak anymore because मैं बात कहाँ करता हूँ, practice भी नहीं है. आसपास कौन है? आज अचानक कोई मुझे बोलता है आप तमिल सीख लो, मैं चलो सीखने की कोशिश करूँगा, बोल ही नहीं पाऊंगा, ना घर में कोई बोलता है. How is it possible? वो practically नहीं है. So I think every citizen is equal, every language is equal and important. ये वो देश है ही नहीं. I think हमारे दिल एक होने चाहिए, भाषाएं चाहे नहीं हो. बिल्कुल. Yeah. You're among the very few people who seem to take criticism very well. Not a lot of actors, when they do films like this, जब बाल की खाल निकालते हैं, जब फिल्म्स निकलती है, important फिल्मों की बात कर रही हूँ मैं, तो they don't seem to take it very well sometimes, because they feel like we've done it with a good intention, but you've been criticized. Even Article 15, very, very few criticism came along, but you took it. I'm okay with it. How will I learn otherwise? I'm okay with criticism. अगर वो नहीं मिलेगी आप सीखेंगे कैसे? I think we are on this journey to ever evolve and learn. I'm still learning about casteism. I'm still learning about LGBT. I'm still learning about Northeast issues. So we are actors, So with each and every film there are different subjects and every subject is so vast. कितना आप सीख पाओगे? और अभी भी सीख रहे हैं. And that's what I'm saying. Like a director like Anubhav Sinha, he discovered a sweet spot after 50. मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ तो मुझे और भी सीखना है. So I think it's all about learning for every artist. You're someone who's very aware of things, and that is why the subjects that you choose are वो दिल से आती है आपके subjects के लिए कि इस subject पे focus करें, ये उठाते हैं. But of course the industry around you might not be as aware as you are. I think it's just I explain it to them off screen because I just don't want to confront them. You do that? I do that, yeah. That's wonderful. Because on screen, you just don't want to be confrontational and just break the flow of the show or anything. Because I think I know where they're coming from. They are not aware, and of course it comes with time also, and it comes with ignorance as well. So आप उनको समझा सकते हो. आपने समझाया है? मैं समझाता हूँ कई बार यार. आपने किया है ये? हाँ किया है मैंने. And वहाँ से response कैसा आता है? They're okay with it, of course. It's the way you say it. Like I don't have to just. I'm not that person. I'm not confrontational as a person. Like there's a dichotomy in my head. I'm always in this conflict that as a person, I'm non-confrontational, but as an artist, I'm very confrontational. That's a good. So probably I'm having an alter ego on screen. I'll choose topics which are very confrontational and which goes against the popular belief. But on Twitter, on social media, I will not post anything or I will not confront anyone because I think I should say something through my art, not as a person, because as an actor, you should just act. If you don't have that in-depth knowledge of anything, just don't comment on anything. So just say it through your art. We always keep saying Ayushmann is fearless, and you are with your choices. But what are you fearful of? What is your fear as an actor today? My USP is to do things which is against the popular belief. Yeah. But sometimes you cannot go so against popular belief that they don't accept it anymore. You have that fear? That's the biggest fear. Because I've seen that happen with LGBT films of mine. Like, they don't want to watch it simply because the theme is that. In fact, Shumangal Zara Savdhan was the only LGBT film which made 10 crore opening. Yeah. That's never happened in the past. But still, it was not a 100 crore film. Yeah. Because I always thought when I read the script on paper that it can touch 100 crores, the kind of humor it had, the kind of, it was very front bencher. But it wasn't preachy. Exactly. It was not preachy. So I think Indian cinema will age when an LGBT film or a film which is against the popular belief touches 100 crores.
So that's my biggest fear. That how to tread that middle path. Like sometimes, of course, as an artist, you want to do something very different, but it cannot be diagonally opposite to the popular belief, because we also need commercial success. Yeah. Because then they'll not be banking on you, right? If you don't get Because that. you need to do films like Dream Girl, Bala, Badhai Ho, you know, which touch 140 odd crores, so that you'd get courage to do films like Article 15, Anek, or films which support a particular community, which is against the popular belief. So, you know, that's the biggest dichotomy in my head as an artist. And it's a difficult one. Yeah. Thank you, Ayushmann. Thank you, Rudra.